Asian Science Class 6 Chapter 1 Food Where Does It Come? भोजन हम लोग को कहाँ से मिलता है? We all eat chapati, roti, rice, bread, butter, fruit and pulse, vegetable, oil, butter, desi ghee. Some of also use eat meat, chicken, fish, and all of also drink milk. These are some of example of food. हम लोग रोटी, चावल, ब्रेड, बटर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल, बटर, देसी घी और मीट, अंडा, मांस, मछली और हम लोग में कुछ दूध पीते हैं, वो सभी भोजन का उदाहरण है। Definition of food: anything which we eat to live is called food. Anything which we eat to live is called food. Food is necessary because it provides matter for growth and energy to work. भोजन है जो हम लोग को इसलिए जरूरत है क्योंकि वो एनर्जी प्राप्त करता है, जिसके कारण हमारा बॉडी ग्रोथ होता है और एनर्जी जिससे हम काम करते हैं। Definition of food I'll follow: a substance which eaten by us to do grow, maintain our body and live in health. भोजन इस सब्सटेंस है जो हम खाते हैं, जिससे हम काम करते हैं, बचते हैं और हम अपना बॉडी को मेंटेनिंग रखते हैं और जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। फूड इज लाइक अ फ्यूल ऑफ बॉडी। भोजन है जो हमारा शरीर का ईंधन है। जस्ट अ पेट्रोल फॉर अ कार, जैसे कि कार के लिए पेट्रोल चाहिए। इन अ सम फैक्ट ऑल एनिमल्स ईट्स फूड टू लिव। इससे सभी जानवरों भोजन खाता है रहने के लिए। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट फूड, सो फूड इज वेरी प्रेशियस। इसलिए यह भोजन है जो बहुत ही कीमती है। सो वी कैन नॉट वेस्ट अ फूड, हम लोग को भोजन नहीं चाहिए। वेराइटी ऑफ फूड बी many different kinds of food in different item on different day। हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन विभिन्न दिनों में खाते। दिस इज अ वेराइटी ऑफ फूड, यही वेराइटी ऑफ फूड। डिफरेंट पीपल ईट्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड एबिलिटी। अलग जगह के आदमी अलग अलग भोजन करते हैं, जिस वहाँ के हैबिटेट, लाइफ स्टाइल और एबिलिटी के कारण। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल मेनली ईट फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेट लाइक चपाती, ब्रेड, नूडल्स, पल्सेस, दाल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। On the other hand, some people eat maintaining rice prepared in the food for a boiled rice, biryani, dosa, idli, and also some people are also this made from egg, meat, chicken and fish. Please note that a particular variety or a prepared food can serve a part of a meal is called dish। जिसका डिफिनेशन हो सकता है the variety of food prepared for served as a part of meal is called dish। Anything of the food substance which can combine to make a particular dish is called। भोजन बनाने में के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है उसमें मटेरियल, उसी को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। Food items and their ingredients: the variety of food items which we eat daily usually make a food more than one material or ingredients. This
will become more clear from the food example. In the order to prepare a boiled ice, we take large rice, boil it in it, so just two ingredients, love rice and water are needed to prepare a boiled rice. Even chapati is made only to flour and water. जैसे कि चावल बनाने के लिए हमको चावल और पानी की ज़रूरत होती है, और रोटी बनाने के लिए हम लोग को आटा और पानी की ज़रूरत होती है। इसी को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। Some food items, however, made by using many ingredients. For example, vegetable curry made by many ingredients, different types of vegetables, salt, spices, oil, water। जैसे कि सब्जी बनाने के लिए हम लोग को विभिन्न प्रकार की सब्जी, मसाले, तेल और पानी का ज़रूरत होता है। Similarly, dish of dal can made by using many ingredients such as pulses, salt, spices, oil and water। जैसे दाल बनाने के लिए हमको दाल, मसाला, पानी, तेल और पानी की ज़रूरत है। The urad dal is black gram, moon is green gram, where a masoor dal is lentil। Some of the common prepared food items of a dish and their major ingredients are given below. Some food items and their major ingredients। बॉयल राइस में हमको क्या क्या चाहिए? राइस एंड वाटर। चपाती के लिए फ्लोर एंड वाटर। वेजिटेबल साल्ट, स्पाइसेस, वाटर। दाल के लिए पल्सेस, दाल, वाटर। इडली के लिए राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर। खीर के लिए मिल्क, राइस, शुगर। ऑमलेट के लिए एग, साल्ट, स्पाइस, वाटर। चिकन करी के लिए चिकन, मीट, साल्ट, स्पाइस एंड वाटर। मटन करी के लिए मटन, ऑयल, स्पाइस, साल्ट। फिश करी के लिए फिश, मीट, स्पाइस, ऑयल एंड वाटर। In the above the description we have the while prepared many food items or a dish. The while here means a cooking while. Yes, while means cooking while. The cooking whiles include the groundnuts, mustard oil, sunflower oil, coconut oil. Please note that in a place of while we can also use ghee prepare the food item. Ghee also called a desi ghee. It made of milk. ये दूध से बना हुआ होता है। Food ingredients like rice, flour, vegetables, pulses, spices, oil, all from various type of plants. Sugar also come from plant. चीनी भी पेड़ से आता है। We get sugar from sugarcane। हम लोग शुगर है जो sugarcane के, which is a plant जो एक पौधा है। On other hand, the food ingredients such as milk, ghee, chicken, mutton, fish comes from animal। ये सभी जो एनिमल से आते हैं। Please note that while is a plant produce, it starts from the seed, but ghee is an animal product। लेकिन घी है जो एनिमल प्रोडक्ट which is made of milk, जो मिल्क से बना हुआ। फूड सोर्स ऑफ फूड प्लांट एंड एनिमल। जो भोजन का स्रोत है
वो प्लांट और एनिमल। Most of the foods come from most of the food which eat come from the plant and animal. So main source of the food is plant and animal. Food grain like dates, wheat, rice, maize, etc. falls fruit, vegetables which we eat all come from various plants. फूड ग्रेन है जो फल्स फ्रूट वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं सभी है जो बहुत भिन्न प्रकार के पौधों से मिलता है। द प्लांट ऑल्सो गिव अस मिल्क अस ऑयल। प्लांट है जो तेल भी लाइक ग्राउंड नट्स ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल which are used for cooking food. Sugar, spice, tea, coffee are also plant products. चीनी, चाय, कॉफी ये सभी प्लांट का ही प्रोडक्ट है। इन फैक्ट प्लांट आर द मेजर सोर्स ऑफ द फॉर फूड ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। प्लीज नोट द ग्रेन यूज फूड आर कॉल्ड फूड ग्रेन। जो अनाज हम खाने के लिए यूज करते हैं उसको फूड ग्रेन कहते हैं। और सीरियस इसको अनाज कहते हैं। वी कैन से दैट प्लांट आर सोर्स ऑफ फूड मटेरियल्स। हम कह सकते हैं प्लांट है जो फूड सोर्स है फूड मटेरियल सीरियल्स। सीरियस में बेट आ जाएगा मेज, राइस, sorghum, millets, pulses, wild fruit, vegetables, etc. Above the half of the human foods come from two crops, wheat and rice. ऊपर से आधा से बेसी जो गेहूं और चावल से रहता है। wheat grain are ground to make a flour for chapati. wheat गेहूं का दाना को ग्राइंड मिल में फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद हम चपाती बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं। राइस आर यूज सच एज फॉर्म ऑफ द बॉइल्ड राइस। चावल को हम लोग बॉयल करके बनाते हैं जिससे बिरयानी और डोसा, इडली जैसे विभिन्न प्रकार के भोजन बनाते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस फूड मटेरियल सच एज मिल्क, एग, चिकन, मीट, फिश एंड हनी। हम लोग जानवर से मिलता है मिल्क, egg, chicken, fish, and honey. Animals like cow, buffalo give us milk. Goat and camels, two animals which give us milk. The adult female chicken also are called adult fish chicken को कहते हैं hens. The hens give us milk. Hens हमें अंडा देती है। Goats and sheep give us milk और mutton. Please, when we talk of chicken as a food material, it actually means a chicken meat. इसका मतलब हुआ chicken meat. Yet by saying the meat usually means a mutton. इसी को हम मटन भी कहते हैं। Goat and sheep meat are also called mutton, which fish and pork are also animals used as food many people. Honey is another food provided by animals. Honey comes from insect called bees. हमारे जो मध आते हैं मध जो बी मतलब मधुमक्खियों से। प्लांट एज अ प्लांट पार्ट एज ए भोजन के प्लांट के कुछ भाग जिसको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसे वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स
आर यूज एज अ फूड मटेरियल्स बाय अस। हम लोग के जो प्लांट के विभिन्न अंगों को जो भोजन बनाते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, सीड, जैसे में जड़, तना, पत्ता, फूल, फल और इसके बीज। That means almost all parts of the plant are used in one way or other discussed below। प्लांट के लगभग सभी भागों को हम लोग अपना आहार यानी खाने में यूज कर ले। पहला है प्लांट्स रूट्स, जिसका हम लोग जड़ खाते हैं। Some plants store food in their roots। कुछ प्लांट है जो अपना भोजन जड़ में स्टोर करता है। विच एक्चुअली मॉडिफाइड रूट, जो रूट को बढ़ाता है। बी इट्स द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स एज फूड, जैसे में जिसका एग्जाम्पल है कैरोट, लेडिस, बीन्स, स्वीट पोटैटो, टर्निप, गाजर, मूली, आलुआ और सलजम। विच आर यूज एज अ फूड मटेरियल, जिसका हम लोग जड़ खाते हैं। सम ऑफ रूट्स पार्ट्स बी इट्स आल्सो, जैसे इस फिगर में बताया गया है। कैरोट, लेडिस, बीन्स, इसको कहते हैं चुकंदर, स्वीट पोटैटो, टर्निप। प्लांट स्टेम एज अ फूड, प्लांट के जो तन हम लोग खाते हैं। सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम, कुछ प्लांट है जो अपना भोजन स्टेम में स्टोर करता है। विच एक्चुअली मॉडिफाई अंडर ग्राउंड स्टेम, जो स्टेम के अपने आप को मॉडिफाई करता है। बी कैन ईट स्टेम फूड, फॉर एग्जाम्पल ओनियन, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक। विच जैसे कि प्याज, आलू आदि, लहसुन और हल्दी, जिसका हम लोग तना खाते हैं। विच वी कैन यूज एज अ फूड मटेरियल। सम प्लांट विच यूज एज अ फूड आर सोन, जिसका फोटो को मैं नीचे दिया हुआ। Onions, potato, ginger, garlic, turnip। Plants live as a food, भोजन प्लांट के पत्ती, जिसको हम लोग भोजन बनाते हैं। जैसे में इसका में आएगा पालक, फ्लावर्स ऑफ बनाना, मुस्तार्ड, जैसे सरसों का तेल होता है उसी का पत्ती, कैबेज, लेचस, इस सभी को हम लोग पत्ती खाते हैं।